So, question is, a man is riding on a flat car traveling with a constant speed of 10 meters per second. He wishes to throw a ball through a stationary hoop 5 meters above the height of his hands in such a manner that the ball will move horizontally as it passes through the hoop. He throws the ball with a speed of 12.5 meters per second with respect to himself. So इसमें हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट है, व्हाट मस्ट बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. सेकंड है, हाउ मेनी seconds after he releases the ball will it pass through the hoop. And the last part है, at what horizontal distance in front of the hoop he releases the ball. So सबसे पहले रफ स्केच बना देते हैं कि एक्चुअल में वो किस तरह से है. तो ये हमारे पास एक लेवल ग्राउंड है. सपोज दिस इज द कार एंड ये मूव कर रहा है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से. इसके ऊपर एक आदमी है और इसके ऊपर हाइट जो है 5 मीटर हाइट जो है वो आगे जाके क्या है, एक हुप है. तो उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ये हुप है और जो इसकी हाइट है वो 5 मीटर है अबव द हैंड्स ऑफ द या हेड ऑफ द दिस पर्सन, ये मैन. तो इसमें जो बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट मस्ट बी द वर्टिकल कंपोनेंट. ओके, तो इसका जो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, वी कैन से दैट ये इसका अगर हेड रहेगा यहाँ पे, यहाँ से ऐसे थ्रो करेगा ये और बॉल ऐसे ट्रेवल करेगा एंड इट विल बी पासिंग थ्रू दिस हुप लाइक दिस. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट in such a manner that a ball moves horizontally at it passes through the hoop. तो यहाँ से क्या है, सिर्फ horizontally move करेगा. horizontally moving means it will be almost vertical component है इसका. वो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक उसका इनिशियल वेलोसिटी. सपोज कोई वेलोसिटी u है जिससे ड्रॉप किया इसने, बॉल थ्रो किया, एंगल थीटा है एंड वी हैव टू, ये डिस्टेंस अभी भी निकालना है. ये सपोज दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट P. सो हमें OP भी निकालना पड़ेगा कि OP कितना है और टाइम निकालना पड़ेगा कि टाइम कितना है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इसका हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं निकालने के लिए. तो फर्स्ट हम पार्ट क्या करेंगे, कंसिडर दैट द बॉल रिलीजेस द हुप व्हेन इट इज अ हाईएस्ट पॉइंट. ओके, सो इसमें भी कंसिडरेशन करते हैं. कंसिडरिंग that the ball, वही जो क्वेश्चन में लिखा था वही इसको डिटेल में यहाँ लिख लेंगे. कंसिडरिंग द बॉल क्लियर्स द हुप, क्लियर्स मीन passes through the hoop when it is at its topmost, it is at its topmost point. तो जैसे यहाँ पे जो है, दिस पॉइंट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस एंटायर ट्रेजेक्ट्री. ओके, नाउ जो है हमारे पास, इट इज ऑलरेडी मूविंग, स्टैंडिंग, द पर्सन ऑलरेडी कार के ऊपर स्टैंडिंग, it is standing on the car, so we can say that this is the car. So we can find out the relative velocity. So we can say that velocity of the projection, velocity of the projection of the ball relative to the man, velocity of the projection
of the ball relative to the man. Relative to the man. A man is nothing but car, because दोनों का एक ही combined velocity रहेगा, दोनों combined है, man और car. So we can say that velocity vector of ball with respect to man will be equal to velocity of ball minus velocity of man. और यहाँ से हम velocity of ball निकाल सकते हैं. Velocity of ball will be equal to relative velocity. तो यहाँ से velocity of ball निकाल सकते हैं हम. हो जाएगा हमारे पास velocity of relative velocity VBM plus velocity of man. So let us suppose that if the ball is projected at a velocity u and at an angle of projection theta to the horizontal. तो हम इसका दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, which we can say that ux for the ball, rather for ball will be equal to u cos of theta plus 10, and its vertical component uy for ball is equal to u sin of theta. लेकिन जो relative velocity का है, जो कार है, that is only in the horizontal direction. So but velocity of the car, but velocity of the car is in horizontal direction. तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है और अदर वर्टिकल कंपोनेंट है, that is Vy of the ball, is not affected by the horizontal motion of the car. So this implies that vertical component of ball's velocity is here rather remain unaffected. Okay, so it means, so हम formula use कर सकते हैं. What will be the vertical distance traveled by the ball? You can say that. So vertical distance traveled by the ball. We can write the formula as v square y
minus u square y is equal to 2a s of y. So in this case, a of y will be equal to g, and the vertical component of initial velocity relatively is 0. So we can say u of y is equal to 0. So from here we can find out our s of y. So s of y will be equal to, velocity already we know is given as 12.5 sine of theta its whole square divided by 2g, and we know that the vertical distance traveled by the ball is nothing but this one, and this is given as 5 meters. So we can replace this equal to 5. So further we can find out what will be our sine square theta. So we can say that sine square theta is equal to 5 into 2 into 10 divided by u square, that is 12.5, and its square. So from here we can find out sine theta. So we can say that our sine theta will be coming as 4/5, or from here we can also find out cos of theta, that is coming as 3/5. So we can find out what will be the velocity in y direction of the ball. Will be equal to u sine of theta, and u already we know is 12.5. Sine of theta is given as 4/3, so this will be coming as 10 meter per second. So this was our first part. In the second part we are going to find out the time of flight, time to reach the maximum height. We can say that thus time taken to reach maximum height will be equal to total time of flight divided by 2. Total time of flight divided by 2. And to total time of flight we already know the formula, that is given as 2u sine theta divided by g, or rather 2g in this case. If you substitute the value we get this as 2u sine theta, we already know is given as 10, and this is 2 multiplied by 10. This will be coming as 1 meter per, 1 meter only, 1 second, it is time, so it will be coming in 1 second. And last is we are going to find out the horizontal distance, of the loop of the hoop from the point of projection, This will be nothing but the distance traveled within this 1 second. So we can write that velocity in x direction multiplied by time, let's call this as t, multiplied by t. So ux is 12.5 cos of theta multiplied by 1. Cos theta is 3/5, so this will be 12.5
divided by 3 by 5, and sorry, I missed 10 plus 10 because of the relative velocity. 12.5, so this will be coming as 12.5, and here also 10. Sorry, my apologies. So this will be coming as, this will be equal to 17.5 meters. So this is the horizontal distance. So this is the third part. Thank you.